मेरा नाम इकबाल है और मैं टेक्नोलॉजी। जी, मेरा नाम हारून रशीद है। I work for telecom regulation. Yeah. वो आप लोगों ने देखी कि 2013 में हमने किया और चाइना मोबाइल लॉन्च कर रहा है। चाइना मोबाइल लॉन्च कर रहा है और नोकिया भी लॉन्च कर रहा है और डिफरेंट मॉडल आ रहे हैं मार्केट के अंदर। 2013 अच्छा जो इसके बाद जो नेक्स्ट डे हुआ वो चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं वीडियो पे कि और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं। Marketing and manufacturing Nokia, and I can feel the challenges
much easier for us to collaborate, right? So you will find that in a broad ecosystem there are different opinions about what's important, different lenses that we see things through. At the end of the day, the fact that you have 3 open source projects on the stage means that it's highly likely that innovation from different parts of that ecosystem can come together. इसमें किसी को कोई चीज़ कोई पूछना हो या कोई क्वेश्चन हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ पूछें, या अगर किसी को कोई बात नहीं समझ आए या अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन हो। जैसा आप देखें कि इसमें इस कांग्रेस के अंदर, इस पर्टिकुलर कांग्रेस के अंदर दुनिया भर की जितनी बड़े बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर हैं वो आते हैं, मौजूदा फायरफॉक्स की CEO वाइब्रेंट जिन्होंने बनाया वो लोग आते हैं। तो ये जो दिस पर्टिकुलर इवेंट जो है जो GSA में है, ये आप कह सकते हैं एक तरह से कि वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स है जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन हम सबको होनी चाहिए कि अगर आप टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं या इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन सी जो बड़ी जो टेलीफोन हैं, जो बड़े बड़े ऑपरेटर हैं या कंपनीज हैं, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं। 2013 के अंदर वो लोग क्या क्या चीज़ें लॉन्च करने का सोच रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। Very
2013 के अंदर क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा। ये जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज हैं, ऑपरेटर हैं, वो डिफरेंट जो सेल फोन निकाल रहे हैं, डिफरेंट सेल फोन लॉन्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो क्या क्या होगा। एक छोटी सी और वीडियो है, उसके अंदर पूरे जो भी मोबाइल GSMA के अंदर हुआ, मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जो चीज़ें हुई, उन सब का एक वीडियो के अंदर दिखाया है, जिससे सब चीज़ जो है जो हमने वीडियो देखी उससे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें लॉन्च करने वाली हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सैमसंग गैलेक्सी कैमरा के बारे में पूछना चाहूँगा, इसका मोबाइल वर्ल्ड से क्या लिंक है? मतलब इसमें क्या GSM टेक्नोलॉजी यूज हो रही है? जो इसके एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं तो ऐसा है कि इसमें 3G यूज हुआ है, मतलब जो आपने पिक्चर्स खींची हैं वो आप डायरेक्टली सोशल नेटवर्क्स पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये मोबाइल सिम के थ्रू हो रहे हैं या फिर 3G टेक्नोलॉजी इसके अंदर बिल्ट इन होगी? ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर बिल्ट इन होगी, लेकिन इस पर्टिकुलर इवेंट के अंदर इनका आने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो 2013 के अंदर वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस कराएंगे या जो मॉडल वो इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको वो इवेंट में शो कराते हैं। और अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे जब आप इवेंट में जाते हैं तो आप एक ही साथ, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपने देखा कि 200 डिफरेंट कंट्रीज से 72,000 विजिटर्स आए थे, इसका मतलब कि आप एक पर्टिकुलर इवेंट से 200 कंट्रीज में मैसेज अपना फॉरवर्ड कर रहे हैं, और 72,000 जो विजिटर्स आए उस वक्त आप उनको अपना लाइव डेमो करा सकते हो अपनी प्रोडक्ट का, या आप उनको डायरेक्ट नॉलेज दें। अगर उनको कोई क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्टली आपके पास आ सकते हैं। अगर वो मार्केट की एडवर्टाइज करेंगे किसी भी नई चीज़ को, तो उसके अंदर ज़्यादा टाइम और ज़्यादा सब चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव वगैरह सब ज़्यादा यूज होगा। इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका आने का सैमसंग का जहाँ तक मैं समझता हूँ वो मकसद ये होता है कि जो जो चीज़ें 2013 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग लॉन्च करेंगे, या जो जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेंगे या अपनी सर्विसेज को अपग्रेड करेंगे, वो यहाँ पर आके बताएं, ताकि एक ही साथ सबको मैसेज एक ही जगह पहुँचे। ये उनका है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे इसमें जैसे कि मैंने देखा कि इसमें नोकिया का मेजर पार्टिसिपेशन था। नंबर 1 एक तो ये यूरोप में है, एंड नोकिया बीइंग पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया। उनकी नई प्रोडक्ट ऑफरिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उन्होंने $200 में विंडोज़ फ़ोन अभी लॉन्च किया है। उस बारे में अगर बताइए, अगर आपको उनकी वीडियोज़ अगर मिल सके तो वो हमारे इंटरेस्ट का होगा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, इसलिए कि हमारी मार्केट जो है ट्रेडिशनली वी आर विंडोज़ और माइक्रोसॉफ्ट मार्केट। एक तो ये, दूसरा इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इलेक्ट्रिक रेगुलेशन कि मोबाइल की थेफ्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड इज़ अ वेरी सीरियस फिनोमेनन। अमेरिका में FCC ने रेगुलेट किया है कि लॉक सिम को अनलॉक करना इज अ क्राइम। और दूसरा ये है कि ICH के हवाले से जो पाकिस्तान को FCC ने बिल्कुल अबेंडन कर दिया है, क्योंकि वो ICH का बनाना जो है वो अगेंस्ट कॉम्पिटिशन, और वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, और उससे हमारी स्टॉक मार्केट को, मोबाइल ऑपरेटर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसमें मेरे ख्याल है हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो थेफ्ट ऑफ मोबाइल, और उसमें पाकिस्तान का इंटेलिजेंस शेयर करना विद इंटरनेशनल रेगुलेटर। क्योंकि ये है कि अगर लॉक का फ़ोन जो है पाकिस्तान आ जाता है और वहाँ आके किसी ने उसको अनलॉक कर दिया, अगर जो US में FCC का जो डेटा बेस है उसने उनकी डेटा बेस में आ गया कि फ़ोन चोरी हो गया, ये लॉक स्क्रीन का फ़ोन है, ये यहाँ नहीं है, फ़ौरन को ट्रेस कर लेंगे, और फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन या वो गवर्नमेंट इसके लिए होता है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने ऑपरेटर्स को और गवर्नमेंट को रियलाइज़ कराना है कि ये फ़ोन की चोरी यहाँ भी बंद हो, और जो ग्लोबल थेफ्ट हो रही है उसको भी हम उसमें वी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। उसका होगा ये कि वो US से बैठ के पाकिस्तान में जो फ़ोन आ गया होगा उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो बिल्कुल वो ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए कि एप्पल की बाय डिफ़ॉल्ट जो है बैटरी सेटिंग्स पे है, वो उसको वो कर सकते हैं, डेटा भी और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। मगर अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये हो चुका है हमारे यहाँ तमाम फ़ोन जो यूज़ आते हैं रिफर्बिश्ड, वो
यहाँ पर उसको सॉफ्टवेयर से किसी भी तरीके से वो अनलॉक कर देंगे। और उसके लिए होगा कि आगे हमारे गवर्नमेंट या एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं अगर वो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे जो कि बहुत जल्दी करेंगे, उस वाले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं विचारिंग प्रोसेस, जब वो चीज़ें पैरामीटर में आ जाएंगी तो वो अगर कोई भी आदमी वो खरीदेगा तो उसका जिम्मेदार है। इसी तरह वाइस वर्षा हमारे भी इसकी खर्च खत्म हो जाएगी अगर हम यूएस के पैटर्न को फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना है या सजेशन है तो प्लीज बताइए। हमारे जो CPLC है वो क्यों मोबाइल बैटरी वर्क ही नहीं करती? CPLC जो है वो अभी तक वो मुक्का में लगे हुए हैं कैमरेज लगाने के लिए और अभी तक वो नहीं हो सका और हमारे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जबकि उसमें कुछ वेंडर ने फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑफर किया मगर CPLC उनको एंडोर्स नहीं करता। आप कुछ पूछना चाहते हैं? मोबाइल यहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं, यानी कि पूरी इम्पोर्ट चल रही है क्योंकि यूज मोबाइल जाते हैं यहाँ पे क्योंकि यहाँ का ये बाद में अनलॉक होते हैं। तो इसका तो एक ये कि या तो यूज मोबाइल जो इम्पोर्ट हो रहे हैं उसकी और पाबंदी लगाई जाए ताकि ये एक मसला इस तरह से बेहद किया जाए। देखिए मोबाइल हमारे यहाँ कोई भी इम्पोर्ट नहीं होता, सब ग्रे मार्केट से आते हैं सूटकेस में भर के। तो दिस विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ ऑन दी ऑफिशियल परव्यू। अगर कोई जेब में डाल के या सूटकेस में ले आया और स्मगल कर लिए, दैट इज अ क्राइम। मोबाइल में डालते हो जी तो वहाँ का रिजेक्ट हो जाता है मोबाइल में आपको जी। एक छोटी सी और वीडियो है मेरे पास जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो भी गूगल के हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली उसका सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है और किस तरह हम लोग यूज़ करते हैं। Whenever you use a Google product, you're connecting to one of our data centers around the world. Let's take a look inside and see how they work. Google employees work here, keeping the data center up and running 24 hours a day. The networking loop is the first stop on our data center floor. The equipment here routes your file to the right server in the next room. These computers also allow our data centers to communicate with one another globally. On the server floor, powerful computers handle everything from millions of searches to hosting YouTube videos and protecting your email against viruses. We custom designed these servers to be compact and energy efficient. To ensure you have access to your data whenever you need it, you can each piece of data stored on at least 2 servers. We store another copy of the most important data on digital tape. When a hard drive breaks, we erase all of its content. Then, for extra security, we destroy it with our disk crusher. The machines in our data centers are always working. Cooling towers like these pipe in water to cool them down and keep them running. When the water heats up, we pump it back outside where it evaporates. Now you have a glimpse walk inside yourself. Explore a Google data center with Street View. GSME के अंदर जो जो चीज़ें हुई उन सबका जो इवेंट के अंदर जो 4 दिन इवेंट चला है उसके अंदर जो जो चीज़ें हुई वो सब एक छोटी सी वीडियो के अंदर है। तो उससे आप सबको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या चीज़ें हम 2013 के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो जो इनोवेशन है या जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो। Progress has just wrapped up in its Grand Via. We've had 72,000 attendees passing these halls from over 200 countries in this special
GSM की सारी मोबाइल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की सारी वीडियोस थी, जिससे हमको पता चला कि इवेंट में क्या क्या चीज़ें हुई और क्या क्या नई चीज़ें हैं जो इस 2013 के ईयर में हम लोग एक्सपेक्ट करें। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए, या अगर किसी को कोई बात कहनी है या कोई आइडिया है तो प्लीज़ शेयर करें। किसी के पास कोई सवाल है? जी मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग होती है, रिकॉर्डिंग हमारे रिकॉर्डिंग कर रहे जो हमारी कॉल होती है वो सारी रिकॉर्डेड होती है। नहीं, अमेरिका ये लाइव तो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हमारा ऑपरेटर होता है वो रिकॉर्ड करते हैं कॉल सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ताकि अगर आप किसी को कॉल कर रहे हैं और आप किसी से कोई गलत बात कर रहे हैं या कोई हेल्प उसके लिए तो फिर वो कॉल रिकॉर्ड नहीं। अमेरिका के लाइव तो कोई रिकॉर्ड ही कर सकता है, पाकिस्तान क्या है लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसके बाद यहाँ से सर्वर एक्सेस नहीं होगा, यहाँ से वो हम लोग जितनी भी कॉल्स करते हैं वो सब चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होती हैं, पाकिस्तान से बाहर होती है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप हमेशा ये कॉल्स हमेशा से रिकॉर्ड होती हैं और हमेशा उनका कोई इख्तियार होता है कि किसी भी फर्ज की गुफ्तगू रिकॉर्ड करते अपने शक की बिना पे या अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग की बिना से। तो ये सारी दुनिया में प्रैक्टिस है, रिकॉर्ड किया जाता है, ये कोई नई बात नहीं, शायद 30 साल पहले भी रिकॉर्डिंग हुई। थैंक यू सो मच सर। किसी और से के पास कोई और क्वेश्चन या कुछ बात कहना चाहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, खास तौर पे हारून सर का जो कि अपना टाइम निकाल के उन्होंने हमें दिया और इवेंट में आए, और आप बाकी सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इवेंट में आए और जो दूर दूर से आए उसका खास तौर पर ज़्यादा शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे भी नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट मंडे आएगा उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग इवेंट रखेंगे और उसके लिए टॉपिक और जो है जो भी आइडियाज़ होंगे वो फेसबुक पे शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगल से जो चीज़ आती हैं वो ठीक। शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने